Good morning, all of you. In yesterday's video or in previous video, we have learned two theorems. Thales theorem is basic proportionality theorem and its converse. So, what basic proportionality theorem says us that if a line is parallel to any of the side of a triangle, then that line also cuts the other two lines, and that line cuts the other two lines in the same ratio. वो जो लाइन रहती है वो जो दो रिमेनिंग जो साइड्स हैं उनको सेम रेशियो में क्या करती है, डिवाइड करती है. और कॉन्वर्स क्या बोलता था, अगर एक लाइन है जो दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी वो हर वक्त तीसरे लाइन को कैसी होती है, पैरेलल. थेल्स में पैरेलल दिया था, अपने को सेम रेशियो में डिवाइड करती है ये बताना था. यहाँ पे सेम रेशियो में डिवाइड करती है दिया है और लाइन पैरेलल है अपने को बताना है. सो बाय दिस टू वी कैन सॉल्व द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 6.2. एक्सरसाइज 6.2. It's very easy. It's only depend upon Thales theorem and its converse. So it's very first question is 6.17 figure. That figure I will draw here only. Yes. We have to show in 1 and 2 DE is parallel to BC. What is given to us? DE is parallel to BC. Find EC in 1 and find AD in 2. So the figure is like this. Number first in that it is A, B, C and line DE is given to us, which is parallel. It is 1 centimeter. It is, we don't know, we have to find. It is 1.5 and it is 3 centimeter. Okay, what is given to us in triangle ABC? In triangle ABC, DE is parallel to BC. DE is पैरेलल टू BC. अगर DE BC को पैरेलल है तो बाय थेल्स थ्योरम व्हाट वी कैन राइट, देयरफॉर AD अपॉन DB का रेशियो AE अपॉन EC को इक्वल रहेगा. AE अपॉन EC. Why? Because lines are parallel. There this is because of Thales theorem. ठीक है. अब AD आपको दिया है, it is how much, 1.5 upon DB is given, it is 3 centimeter equals to AE is given, that is 1 centimeter and EC we have to find. Now do cross multiplication. Before cross multiplication we can cancel this. 1 za 2 za, right? Now here is 1 upon 2 equals to 1 upon EC. Cross multiplied, EC into 1 will be EC, 2 into 1 will be 2. So EC is equals to 2 centimeter. Okay. So by DPT we have solved this one. Now let us see the second problem of the same question. It is again in triangle ABC. Figure may be somewhat it is D and it is E. So question number 1, 2. What is given to us? Here BD is equals to 7.2 centimeter. Then AE is
1.8 centimeter. EC is equals to 5.4 centimeter, and we need to find what? AD. What we have to find? AD. And what is given to us? Important thing, that DE is parallel to BC. As DE is parallel to BC, we can use here Thales theorem. So what Thales theorem says that therefore AD upon DB is always equals to AE upon EC. Correct? This is because of the Thales theorem. Okay. Now what is AD? AD we have to find. So AD upon DB is 7.2 equals to AE is how much? 1.8 upon EC is how much? It is 5.4. Okay. We can plot this what? Points, and AD upon 7.2 is equals to, both of them comes in table of 9. 9 ones are 9, 6 are 18 के टेबल में आते हैं देखो. Yes, 9 2s are 9, 6 are 2 1s are 2 3s are, right? Both comes in table of 18 are 21 are 18 3s are. तो क्या है यहाँ पे 1/3. Now let us cross multiply them. क्या आएगा? 3 into AD is equals to 1 into 7.2. Send 3 to that side. Therefore AD will be equals to 7.2 upon 3. Therefore AD will be equals to 3 2s are 6 point 3 4s are 12. That is AD is equals to 2.4 centimeter. ठीक है? और एक प्रॉब्लम देखते हैं. आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 में दो ही प्रॉब्लम है. सो विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज E and F are the points on PQ and PR respectively of triangle PQR. एक ट्रायंगल PQR है. One triangle is there, that is PQR. E and F are on PQ and PR. Here suppose E is there and here suppose F is there. Suppose no they are. Of triangle PQR, for each of the following cases state whether EF is parallel to QR. We have to state whether EF is parallel to QR or not. कब रहेगी? पैरेलल कब रहेगी? जब रेशो दोनों का क्या रहेगा? सेम. सो लेट अस सी. उसमें का नंबर 1, PE is equals to 3.9 centimeter. EQ is equals to 3 centimeter. Then PF is 3.6 centimeter and FR is 2.4. Let us check for this. क्या चेक करना है मेरे को? PE upon EQ, ये रेशो PF upon FR के इक्वल है क्या? अगर रेशो इक्वल है तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम कन्वर्स से होता है. अगर रेशो सेम है तो लाइन मस्ट बी पैरेलल. सो we'll take out the ratio of first PE upon EQ. PE कितना है? 3.9. EQ कितना है? 3 है. करो दोनों को कैंसिल, क्या आएगा? It will be 1.3. 1.3 can be written as 13/10. Right? चलो ये ऐसा कर दिया. 3 1 0.3 1.3 can be written as 30/10. Next ratio, that is PF upon FR. What is PF? PF is 3.6. What is FR? 2.4.
ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए therefore EF is not parallel, not parallel, और आप लिख सकते हो EF is not parallel to QR, पैरेलल नहीं है। ठीक है, क्यों पैरेलल नहीं है? रेशो इक्वल नहीं है, तो यहां पे लिख सकते हो therefore, सॉरी इसके पहले आप लिख रहे therefore by converse of Thales theorem, by converse of Thales theorem, what we can write that EF is not parallel to QR। उसका ही सेकंड प्रॉब्लम देखेंगे, क्या है सेकंड प्रॉब्लम? सेकंड वन इज PE दिया है 4 सेंटीमीटर, QE दिया है 4.5 सेंटीमीटर, PF दिया है 8 सेंटीमीटर एंड RF is given, RF दिया है 9 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। ओके, नाउ लेट अस टेक द रेशियोज PE upon EQ, PE upon EQ, what is PE? 4, what is EQ? 4.5, PE upon EQ क्या आएगा? It will be, अभी ये डेसिमल पॉइंट है यहाँ पे, तो क्या लिखोगे डेसिमल पॉइंट को आप? यस, वी कैन डू इट लाइक दिस 40 upon 45, बराबर है 40 upon 45। Now you can divide them. This comes in table of 5, how much are 5 8s are 5 9s are, so it will come 8 upon 9। okay, now here second ratio, that is PF upon FR। what is PF? PF is 8 and FR is 9, so it is 8 upon 9 as it is, so therefore PE upon EQ is equals to PF upon FR। दोनों रेशो सेम है, तो therefore by converse of Thales theorem, by converse of Thales theorem, what we can write? Therefore EF is parallel to QR। ठीक है, यहाँ पे पैरेलल नहीं थी जब ये दिया था, और सेकंड में पैरेलल है जब ये वैल्यूज दिए वाले है आपको। So this is how we have to solve this question। okay, again one question we will see, that is question number 3rd। all are depend upon the Thales theorem, and if you know the statement of Thales theorem and its converse, then it will be very easy to solve the problem depending upon both of the theorems। question number 3। now question number 3 is in figure 6.18 figure, ऐसे कुछ तो भी है फिगर। A C N D C O M B and M।
to do here? See, AM upon AB is equals to AN upon AD. Sorry, AN upon yes AD. AM upon AB is equals to AN upon AD. Let us see रेशियो लिखकर बताना है, मतलब कहां ना हो तो पीपीटी का काम है और अपने को लाइन भी पैरेलल दिए वाले हैं। LN is parallel to BC, LN is parallel to BC। कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं ये दोनों भी? इन ट्रायंगल ABC। So we will do here proof that in triangle ABC MN is given parallel to BC। If MN is parallel to BC, what we can write? We can write AM upon AB, sorry, AM upon MB is equals to, इसको इक्वल रहेगा AM upon MB, AR upon MC, AR upon MC। This is because of the Thales theorem। अब और क्या पैरेलल दिया है? LN is parallel to CD, so this forms a triangle ACD। Therefore, in triangle ACD, LN is parallel to DC। अगर LN parallel to DC है, so by Thales theorem what we can write? We can write AN upon ND, AN upon ND is equals to AL upon LC, AL upon LC। This is because of again the Thales theorem। Okay, now see in equation 1 and 2, AL upon LC, AL upon LC, its right hand sides are same। So as the right hand sides are same, so we can write the left hand side will also be same। Therefore AM upon MB will be equals to AN upon ND, AN upon ND। This from where we have done? From 1 and 2। ठीक है, अब AM upon AB चाहिए अपने को, AR upon AD चाहिए अपने को। तो अब ये कैसा होगा? AM upon ND है अपने पास, अब AM upon MB है, इसमें +1 करो, क्या मिल जाएगा अपने को? +1 करने के बाद में AM plus MB upon MB, AM plus MB upon AB, तो क्या मिलेगा? AM plus MB AB मिल जाएगा, AB upon MB। लेकिन आपको MB चाहिए क्या? नहीं चाहिए, आपको AM चाहिए। और यहाँ पे +1 करने से क्या हो जा रहा है? AM का आंसर हो जा रहा है और MB बच रहा है। So whatever you need, bring it into denominator, because denominator never changes after adding 1। So we'll do its converse। क्या है इसका? MB upon AM is always equals to ND upon AM। ठीक है, क्या किया आपने अपन इसको? We have done the converse of them। ठीक है, अपन ने इसको क्या कर दिया? चेंज कर दिया। अब ऐड 1 करो। Now add 1 to both sides। Add MB upon AM plus 1 equals to ND upon AN plus 1। क्या आएगा सबको? ये आ जाएगा MB plus AM upon AM equals to ND plus AN upon AN। ठीक है, MB plus AM is equals to AB upon AM, and ND plus AM is AD upon AM। क्या चाहिए आपको? यही चाहिए। सिर्फ आप इसको डबल से रेसिप्रोकल कर दो। इफ यू डू रेसिप्रोकल
इक्वल्स टू an अपॉन ad, hence डेरिवेटिव प्रूव। समझ में आया? क्या किया आपने यहाँ पे? इसका अपन ने क्या किया? रेसिप्रोकल, इनवर्स इसको बोलते हैं अपन। इनवर्स we have done here also, at last we have done inverse of that, ठीक है। बाद में इनवर्स करके ऐड वन किया and whatever was need to us that we do, okay। चलो, thank you very much all of you।